New Year to all immigrants from throughout the world, from United Kingdom, UK, USA, Middle East, Saudi Arabia, Dubai, Pakistan, India, and also from Africa, South Africa, and from Sri Lanka and Bangladesh. So I welcome all of you to my show. I'm going to show you in today's video how to apply as a parent of a British child when you do not meet the requirement under partner visa, and how to apply as an adult dependent of British children. So when you ask how many types of visas are there, how do I apply as a partner of a British citizen, how do I apply as a dependent of asylum seeker, how do I apply as a person who is a family member of a person who has got limited leave to remain in the United Kingdom or humanitarian protection in the United Kingdom. So it's me, Barrister Shazia Andam, with 15 years legal experience. So we are going to speak about all of these visa categories after this Brexit issue, because now Brexit has taken place and many changes in terms of free movement have been abolished, and now people are just looking forward to come to the United Kingdom under the immigration rules. So many immigration rules have been eased in terms of visa, a work permit, in terms of business visas for Pakistan, Asian countries, and American people. But for European people, it's going to be a little bit strict in terms of, as compared to their previous free movement rights, and now have to prove certain requirements when they want to come under the work permit, or if they want to come as being if they want to come under the study visa. So there will be requirement for European nationals to fulfill before they can come to United Kingdom. So if you have any questions, you can ask any question, because this is live show and you are watching me live. I'm doing this show in English as well as in Urdu for those people who cannot understand Urdu. So I'm just trying to explain a little bit in English, because I have been asked many times to do it in English language, right? So straightforwardly, how do I apply? How many options do I have to apply if I'm family member of British citizen? Well, you have 4 options to apply. First of all, you can apply as a partner of British citizen. But what if you do not meet the English language requirement, you do not meet the relationship requirement, or you cannot meet the accommodation requirement? So there will be other types of visas, such as parents of British children. If you have children, then this will be easy for you to apply as a parent of British children. And also there is another category, adult dependent relative. What is adult dependent relatives? Adult dependent relatives, the UK visa is for those people who are parents, elderly family members of British citizen, and they are dependent physically, they are dependent physically, they are dependent emotionally, they are dependent financially upon their British citizen, and they want to come to join their British citizen family members, so that they can live here and they can be looked after by their British citizen family member. And also I'm going to talk about the third category, which is going to be the family reunion scheme for those people who are family members of asylum seekers, all people with humanitarian protection in the United Kingdom. So these kind of applications, when we apply human rights or when we apply as a family reunion, then there will be no fee at all from outside the United Kingdom. It's going to be free application for those people who are family members of asylum seeker, and those people who are living inside the UK, they have been granted asylum status, and now they want to call over their family members from outside the UK. This application is going to be free. So you are watching me live. You can ask me any question in the comment below, and also you can participate with your comments and positive approach, because this is new year and we are entering
this new year with new hopes and with new courage, so that we can face the challenges around this world. Okay, let's have a look who have joined us now. Okay, so people have joined us. Danish Azim, Mirza Arslan, welcome to our show. And also Khaliqur Rahman, hi Khaliqur Rahman, Zulfikar Kambo, Aman Khan, Nawaz, Walid, hi Walid, Nadim, Channa Masood, Sahito, Danish Azim, Mir Mangiro, Sayyid Zahib, Badr Manicho. If I have misspelled, I'm so sorry for that, but welcome to this show. Okay, coming back straight away to the UK immigration visa application. So first of all मैं ये बताना चाहूँगी कि जो सबसे पहले हम बात करेंगे पार्टनर के वीज़े के स्पाउस वीज़ा, जो कि यहाँ पर इनकम रिक्वायरमेंट पूरी नहीं कर सकते या वो 18,600 पाउंड नहीं इनकम कमा सकते, तो उनको फिनेंशियल एग्जम्पशंस कैसे मिल सकती है। फिनेंशियल एग्जम्पशन के लिए पहली रिक्वायरमेंट, अगर आपका पार्टनर यूके का पार्टनर अगर आपका यूके का पार्टनर जो है वो कैरियर्स अलाउंस ले रहा हो, पीआईपी ले रहा हो, या यहाँ पर इनफ इनकम उनके पास नहीं हो, या फिर किसी तरह से वो यहाँ पर सर्टेन बेनिफिट्स ले रहे हो, देन यू विल बी एग्जम्प्टेड फ्रॉम मीटिंग फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट। फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट के लिए अगर आप यहाँ पर ये सर्टन अलाउंसेस ले रहे हो, देन यू डू नॉट हैव टू मीट financial requirement of 18,600 pound. And second thing is that if your partner is living abroad, they are earning their income abroad, and the sponsor UK British citizen is not earning, then still income from overseas is counted for the purposes of meeting financial requirement. So फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट के लिए जब आप ओवरसीज इनकम हो या आपके पास कैश सेविंग हो 62,000 पाउंड की कैश सेविंग, देन यू डू नॉट हैव टू शो योर इनकम फ्रॉम द यूनाइटेड किंगडम, राइट? सो मेनी पीपल दे आर लिविंग आउटसाइड and they are stuck there because they are just thinking they might not be able to come to the United Kingdom because they do not meet the requirement. What if they are working from outside the United Kingdom? Then they will be able to show their income from outside the UK, and they can come to the United Kingdom by enclosing certain types of documents. So पहली बात कि इनकम फ्रॉम ओवरसीज वो आपकी काउंट होगी, फिर आपकी जो सेविंग्स है वो आपकी काउंट हो सकती है। अगर आपका स्पाउस 18,600 पाउंड नहीं कमा रहा, तो आपके जो यहाँ पर इसके अलावा जो आपके पार्टनर ब्रिटिश सिटीजन सर्टेन अलाउंसेस ले रहे हों, वो भी एग्जेम्प्टेड होते हैं। जैसे मैंने बात की है कि पर्सनल इंडिपेंडेंट पेमेंट ये उन लोगों के लिए है जिनके लिए मुश्किल हो जाता है, मोबिलिटी मुश्किल हो जाती है, जो मूव नहीं कर सकते, काम नहीं कर सकते, दे कैन अप्लाई टू DWP डिपार्टमेंट, PWD or DWP, I'm not too sure, Department of Work and Pension, right? So you can submit your application, and then they will consider your application under their requirement. They will grant you certain benefits, and then by showing that letter from the DWP, you will be exempted from meeting a financial requirement of 18,600 pounds. So if you haven't applied yet, you can still apply to work DWP department, and you can get the decision within weeks, and then you will be able to claim exemption from meeting 18,600 pound requirement. So this is one of the options where if your partner cannot meet the financial requirement, so this is how you will be able to show your income from outside the United Kingdom. So दूसरी चीज इसमें ये आती है कि अगर आप की रिलेशनशिप रिक्वायरमेंट पूरी ना हो, many people have contacted me, they say they are married outside the UK and they do not want to divorce their wife because of children or other family matters. So this is something family law
of the United Kingdom, there are provisions that if you are married outside the United Kingdom and your marriage is recognized under your culture or religious provisions, then you can apply without giving them divorce, but the provision is you cannot call your wife from second wife or first wife to the United Kingdom in future. So it means that if there are relationship requirements, the relationship problems are there, still you will be able to still you will be able to apply as a partner, as a spouse of British citizen without giving them divorce. So if your matter is more complicated, then you can book a consultation. It's always better to book consultation. This saves your money, this saves your time, this saves you to get refusal or go for appeal. So this is something you can consider to get professional advice from any lawyer, and if you want to book your consultation with me, you will see the contact number around this video, and this facility is only on WhatsApp. You can send me text message by writing consultation. I will consultation, I will assess your case and tell you the merit of your case and also complicated situation of your case. How can you get rid of those situations? How can you apply successfully as being spouse of British citizen if you are facing these problems, relationship issues, or if you are thinking there are financial requirement issues or English language requirements. Sometimes people cannot meet their English language requirement or cannot pass their English test. So there are some options to apply under the human rights grounds if you cannot meet some of the requirements under the immigration rules of the United Kingdom. So again, let's have a look if somebody is asking further question. Okay, so many people have joined us. Actually, I cannot pronounce all of the names. Aftab Malik, hi. Aftab Malik, Mir, Sayyid Zahib, Badr, Aftab Malik, Sami, Ashfaq Ali, Akram, Muzaffar, Danish Azim again. So welcome to all of you for watching this show. Again, I'm just saying Happy New Year to all the immigrants, to all the people around this world, and may this year bring many happiness, many prosperity, and many love in your life in this year. So be positive, be hopeful, and be courageous to face the challenges again. So let's move on to the next stage. So next one, we are going to speak upon that this was the partner visa, right? And many complications were there. अगर आपको complications आ रही है तो फिर there are always alternative options you can use under the human rights, and also you can use exceptions of immigration rules, because within immigration rules there are some exceptions and which allow certain peoples to come to the UK even if they do not, they cannot meet the strict requirement of immigration rules. So if you come under those exceptions, do discuss with me. I will advise you further. I will assess your case, right? So next case, when we talk about parents of children visa, sometimes people, if people are not eligible to apply under the partner visa, then they can apply under the parents option. So what is parents of British children visa? अब पेरेंट्स ऑफ ब्रिटिश चिल्ड्रन मीन्स के अगर आपका स्पाउस यहाँ पर किसी और मैरिज के साथ रह रहा है, वो आपको एज ए पार्टनर नहीं बुला सकता. आपके बच्चे ब्रिटिश हैं, आपके बच्चों को वहाँ पे हर्डल्स हैं, प्रॉब्लम्स हैं, एजुकेशनल प्रॉब्लम्स हैं, सोशल प्रॉब्लम्स हैं, लर्निंग डिफिकल्टीज हैं, फैसिलिटीज नहीं है, तो आप यहाँ पर एप्लीकेशन कर सकते हैं अपने एज ए पेरेंट ऑफ ब्रिटिश चिल्ड्रन. उसमें आपके स्पाउस को 18,600 की रिक्वायरमेंट अगेन नहीं शो करनी पड़ेगी. आपको बच्चों की बेसिस पे आप एप्लीकेशन करेंगे और बच्चों की बेसिस पे आप यहाँ पर आएंगे. उसके लिए आपका स्लाइटली डिफरेंट एप्लीकेशन होता है. डू लेट मी नो इफ यू नीड एनी फर्दर कंसल्टेशन और असेसमेंट इन योर केस एंड you are living outside the United Kingdom with your British children, you want to come to the UK, and your sponsor or your partner cannot invite you,
कैन नॉट स्पॉन्सर यू, तो फिर आप एज ए पेरेंट्स ऑफ ब्रिटिश चिल्ड्रन यहाँ पर आ सकते हैं। उसके लिए डॉक्यूमेंट्स कौन से चाहिए, क्या लीगल रिक्वायरमेंट्स हैं, आई विल गिव यू फर्दर एडवाइस इन दैट मैटर। Okay, so third one I'm going to speak about adult dependent visa. अब एडल्ट डिपेंडेंट वीजा क्या है? एडल्ट डिपेंडेंस वीजा होता है उन पेरेंट्स के लिए, उन लोगों के लिए जो ओवर 65 इयर्स ओल्ड हैं, उनके जो बच्चे हैं यहाँ पर रह रहे हैं और वो एज ए पेरेंट्स यहाँ पर आना चाहते हैं, उनका वहाँ पर ट्रीटमेंट नहीं हो रहा, वहाँ पर वो अकेले हैं, उनके सारे जो ब्रिटिश बच्चे हैं वो यूके में रह रहे हैं। तो ऐसी सूरत हाल में आप अपने पेरेंट्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं एडल्ट डिपेंडेंट वीजा की कैटेगरी में। उसके लिए आपको अपने पेरेंट्स की डिपेंडेंसी शो करनी बहुत जरूरी होती है। अगर आप डिपेंडेंसी शो नहीं करेंगे, आपका एप्लीकेशन रिफ्यूज हो जाएगा, जिसमें बहुत सारे कॉस्ट इन्वॉल्व होते हैं। आपके पेरेंट्स अगर यहाँ पर आते हैं उसमें बहुत सारी हाई फी है ECO की, और अगर आप अपना एप्लीकेशन केयरफुली नहीं करते, डिपेंडेंसी शो नहीं करते, मेडिकल ग्राउंड, फिजिकल डिपेंडेंसी, इमोशनल डिपेंडेंसी, फाइनेंशियल डिपेंडेंसी प्रॉपर तरीके से शो नहीं करते, कंपेलिंग एंड कंपैशनेट सर्कमस्टांसेस अगर शो नहीं कर सकते, देन आपकी फी जाया हो जाती है और अपील के लिए आपको साल हर साल वेट करना पड़ता है। अगर पेरेंट्स के एप्लीकेशन आपके रिफ्यूज हो गए हैं, यू कैन ऑल्सो सेंड मी refusal letter on WhatsApp. I will assess the case and book further consultation in terms of the category, if whether or not you have complied with the certain requirements of Appendix FM of immigration rules. Okay, so एडल्ट डिपेंडेंट रिलेटिव की एप्लीकेशन, जो एडल्ट डिपेंडेंस में बड़े भाई बहन अंकल आंटीज ऑफ ब्रिटिश चिल्ड्रन, वो भी आ सकते हैं, एज लॉन्ग एज यू कैन प्रूव योर रिलेशनशिप, एज लॉन्ग एज यू कैन प्रूव योर डिपेंडेंसी, एंड पीपल हु कम हियर दे कैन हैव बेटर मेडिकल ट्रीटमेंट एंड ऑल्सो दे कैन हैव बेटर they can better be looked after by their relatives in this country. ठीक है, सो हमने कवर कर लिए एडल्ट डिपेंडेंट वीजा, पेरेंट्स वीजा एंड पार्टनर वीजा, सम टाइम विद और विदाउट इनकम रिक्वायरमेंट, विद और विदाउट इंग्लिश लैंग्वेज रिक्वायरमेंट, विद और विदाउट सम टाइम रिलेशनशिप रिक्वायरमेंट, सम टाइम इवन इफ पीपल्स मैरिज कैन नॉट बी कंसिडर्ड under marriage, but still they can be considered under the partnership rule. What is partnership rule? So you can also ring me and get assessment. What's the criteria? How can you meet the criteria? How can you come as a partner instead of as a spouse of British citizen person, right? Okay, so again, people who are watching this show, they are most welcome, and also they can comment, they can question, they can help other people in terms of understanding the criteria of UK immigration application, UK visa application. Okay, so this was the first part of today's videos, and second part is going to be dependent family member of asylum seeker or family reunion application. What is family reunion application? Family reunion applications में अगर यहाँ पर किसी कोई asylum seeker था, उनको asylum status मिल गया, अब उनके वहाँ पर partner हैं, child हैं, और वो उनको यहाँ पर इस country में बुलाना चाहते हैं, even parents को, grandparents को, अपने बाकी family members को अगर यहाँ पर बुलाना चाहते हैं, they can call their relatives over under this category, and by proving that they are family members, by proving their relationship requirement, वो अपने family members को family reunion scheme के तहत यहाँ पर बुला सकते हैं। यहाँ पर slightly ये difference है, sometime if people cannot prove that they were their family members before they were granted asylum status, still they can call over their family members, but then this will be another category as being dependent family member of those people who have been granted humanitarian protection or asylum seeker status in this country, in the United Kingdom. So this is little bit complicated, but in nutshell, family reunion के अंदर जो आपके family members हैं,
जो यूके के बाहर रह रहे हैं, आप उनको बुला सकते हैं यहाँ पर विदाउट पेइंग एनी ECO फी एंड सम टाइम विद अ लिटिल फी, £388 to ECO fee, and you may be able to claim exemption of IHS और health surcharges की exemption भी आपको मिल सकती है। So अब दूसरी बात जो हम यहाँ पर कहना चाहते हैं वो है आपकी little bit we are going to speak about the changes that has happened after the Brexit। अब changes जो हैं कि यूरोपियन नेशनल अब से पहले जो आगे है फ्री मूवमेंट राइट्स के तहत वो आगे हैं, लेकिन अभी जो भी आना चाहते हैं उनके लिए उनको स्टडी वीज़ा है तो उसके लिए वो रिक्वायरमेंट पूरी करनी पड़ेगी, यूनिवर्सिटी से उनको कैश लेटर लेने पड़ेंगे और उसके अलावा उनको प्रूफ करना पड़ेगा कि वो यहाँ पर स्टडी वीज़े के लिए आ रहे हैं। इसी तरह से अगर वो स्टडी वीज़ा वर्क परमिट के लिए आना चाहते हैं देन दे हैव टू प्रूव देयर सर्टन पॉइंट्स एंड रिक्वायरमेंट्स कि वो यहाँ पर वर्क परमिट के लिए आना चाह रहे हैं, और वर्क परमिट के लिए उनको उन कंपनी से जिनके पास स्पॉन्सरशिप लाइसेंस होगा वही उनको वर्क परमिट जारी कर सकते हैं और तभी वो इस कंट्री में आ सकते हैं। इन नटशल मतलब ये है कि अब यूरोपियन कंट्रीज के जो फैमिली मेंबर्स हैं वो तो हम बाद में बात करते हैं कि जून 2021 तक उनके लिए तो टाइम है जो ऑलरेडी यहाँ पर आ चुके हैं, लेकिन जो लोग नए सिरे से यूरोप से आएंगे उनको भी अब इमिग्रेशन रिक्वायरमेंट्स पूरी करनी पड़ेगी। वर्क परमिट के लिए आ रहे हैं तो वर्क परमिट उनको लेना पड़ेगा उन स्पॉन्सर से जिनके पास स्पॉन्सरशिप लाइसेंस है यूकेबीए से। स्टडी वीजे के लिए आ रहे हैं तो उनको यूनिवर्सिटी से स्टडी वीजे का प्रूफ करना पड़ेगा और जिस कैटेगरी में भी वो आ रहे हैं उनको प्रूफ करना पड़ेगा। Alternatively, on the other hand, there are some relaxation for Pakistan, India, Arab countries, Middle East, South Africa, जहाँ पे लोग यहाँ पर एज ए बिजनेस वीजे के लिए आ सकते हैं। बिजनेस वीजे के लिए यहाँ पर आसानी पैदा कर दी गई है, आसान हो गए हैं, इमिग्रेशन रूल्स रिलैक्स्ड हो गए हैं, स्ट्रिक्ट रिक्वायरमेंट नहीं है। जो भी अब इंटेलिजेंट लोग हैं वो यहाँ पर आके अपना बिजनेस करना चाहते हैं उनको अब पहले की तरह 50,000 की इन्वेस्टमेंट या बहुत सारी रिक्वायरमेंट पूरी करने की जरूरत नहीं होती। अब उनको सिर्फ अपना एक आइडिया पेश करना होता है, बिजनेस प्लान पेश करना होता है और उसके बाद वो बिजनेस वीजे में यूके में आसानी से आ सकते हैं। इफ यू नीड एनी फर्दर हेल्प इन टर्म्स ऑफ बिजनेस प्लान एंड ऑल्सो इन टर्म्स ऑफ विच बिजनेस यू हैव बीन रनिंग, कितना आप वहां पर, इसकी एक शर्त यह है कि आपका बिजनेस जो है वो 18 मंथ्स के लिए आपको रन करते होना चाहिए, ओवर 1 ईयर, राइट। सो अगर आपका ऑलरेडी बिजनेस पाकिस्तान में है, इंडिया में है या किसी भी सऊदी अरेबिया में, अरब कंट्रीज में है, then you can come to the United Kingdom as being business person. You can start your business here. It's very easy. It's not complicated, and it does not have the requirement to show your £50,000 in your bank account. As simple as that. So आपको जो है वो बिजनेस वीजे के लिए आसानी होगी, रिलैक्सेशन होगी for the rest of the world, but for European countries they have to follow the immigration rules before they can enter to the United Kingdom as work permit holder or as being a student of any university. So these are the updates in January 2021 in my first video of the 2021. So I'm just giving you some changes, some updates, what's happening, what's going to be happen around this world for UK immigration and who needs to follow UK immigration rules and who has got the relaxation in UK immigration rules. So, कुछ लोगों के लिए ये अच्छी खुशखबरी है, पाकिस्तानियों के लिए, इंडिया में रहने वाले लोगों के लिए, अरब कंट्रीज के लिए, साउथ अफ्रीकन के लिए, इवन अमेरिका के लोग अगर यहाँ पर आकर बिजनेस करना चाहते हैं, दिस हैज बीन क्लासिफाइड सो सिंपल। यू ओनली नीड टू शो द सर्टेन रिक्वायरमेंट यू हैव बीन इन जेन्युइन बिजनेस, you want to come here, you want to set up your business in this country, and then this country will give you so many benefits including some tax exemption or reductions, and also they will help you in your businesses if you really want to establish your business, set up your business in this country. But the requirement is that you are required to have been running your business already in your country,
right? And you have to show certain amount of income you have been receiving as being a business person. So if you need any further information in terms of your business plan, in terms of the further process, a step-by-step guide how to come to the United Kingdom and set up your own business, तो आप कंसल्टेशन बुक कर सकते हैं. बहुत सारे लोग ये करते हैं कि विजिट वीज़ा अप्लाई कर देते हैं. समटाइम विजिट वीज़ा, इफ़ यू हैव नो ग्राउंड्स, देन इट्स वेरी इजी फॉर द एंट्री क्लियरेंस ऑफिसर टू रिफ्यूज़ योर विजिट वीज़ा. अगर आपके पास ग्राउंड्स है, आप यहाँ पर बिजनेस के लिए आना चाह रहे हैं, बिजनेस विजिट करना चाह रहे हैं, आई वुड एडवाइज यू to rather apply under business visitor instead of applying simple standard or family visitor visa. So sometime आप एक एप्लीकेशन करते हैं, वो एप्लीकेशन आपकी एक्सेप्ट हो जाती है. वही एप्लीकेशन की अगर आपके ग्राउंड्स जो है, बेसिस जो है वो दूसरी हो, तो वो आपकी रिजेक्ट हो जाती है. वाई? बिकॉज you cannot assess your case under the immigration rules or according to their guidance which has been issued by the government of United Kingdom. So इसलिए it's always better to seek proper legal professional advice before you can put any application, because once you put your application and your application is refused, what's going to happen? Then there will be less chances in the second application. There will be less chances in your third application. So it's better to seek your professional legal advice from any lawyer and then you put forward your application. क्योंकि फिर आपको पता चलता है कि किस सिलसिले में आपने एप्लीकेशन करनी है. आपके एप्लीकेशन के ज़्यादा चांसेस किस में हैं. हो सकता है कि आप बिजनेस वीज़े के लिए अप्लाई करें और स्ट्रेट फॉरवर्ड आपकी अगर रिक्वायरमेंट पूरी है तो वो आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड सेटलमेंट की एप्लीकेशन मिल जाए. और हो सकता है कि आप विजिट वीज़े के लिए 6 मंथ्स की एप्लीकेशन करें लेकिन वो आपकी एप्लीकेशन रिफ्यूज हो जाए. हालांकि बहुत सारे लोग ये समझते हैं कि विजिट वीज़ा तो ओनली फॉर 6 मंथ्स है और ये आसान होगा, एंट्री क्लियरेंस ऑफिसर जो है वो आराम से ये वीज़ा दे देगा. अगर हम सेटलमेंट की एप्लीकेशन करेंगे तो वो हमारा एप्लीकेशन सक्सेसफुल नहीं होगा. नाउ this is completely wrong assumption. As long as you can show your genuine intention, as long as you can show your genuine business, as long as you can show your genuine grounds of your application, then there are more chances of success in your application for UK visa immigration. सो इमिग्रेशन में बहुत सारी कैटेगरीज हैं. जैसे आज की वीडियोस में फर्स्ट स्टेप में बात की कि फैमिली वीज़ा किस तरह से आप अप्लाई कर सकते हैं. अगर आपकी रिक्वायरमेंट पूरी नहीं है तो उसका ऑल्टरनेट आपके पास क्या होता है. उसके बाद हमने ये डिस्कस किया कि फैमिली रीयूनियन, वो लोग जो असाइलम सीकर है अपने फैमिली मेम्बर्स को बुलाना चाहते हैं, उनके लिए क्या सिंपल स्टेप्स हैं जो उनको फॉलो करने हैं और वो यहाँ पर आ सकते हैं. थर्डली, यूरोपियन जो कंट्रीज उनके लिए भी अब वो जब अगर अभी तक एंटर नहीं हुए हैं, नेक्स्ट जो एंटर होंगे तो उनको भी वर्क परमिट लेना पड़ेगा. स्टडी वीज़े के लिए उनको यूनिवर्सिटीज़ के डॉक्यूमेंट शो करने पड़ेंगे, एडमिशन लेना पड़ेगा. बाकी जो उनकी बिजनेस के लिए बिजनेस डॉक्यूमेंट्स शो करने पड़ेंगे, जैसे बाकी कंट्रीज फॉर द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड रिक्वायरमेंट होगी, उसी तरह से बिजनेस वीज़े के लिए वो भी यहाँ पर आके अपना बिजनेस सेटअप कर सकते हैं. बट दे हैव टू गो थ्रू द सर्टेन रिक्वायरमेंट्स आई हैव जस्ट टोल्ड इन माय दिस video. So in the end, let me just have a look who have joined us now. Okay, George, Kenny, Happy New Year. Thank you. Akram, Dawar, Mia, Ashfaq, Kader Raza, Falak Sher, and many more people. If I cannot pronounce your name, forgive me. Okay, I think there. Chaudhry Kashif, Sohail Mirza, Shiraz Ali, Zile, thank you so much and take care of yourself. This is New Year. Happy New Year again and again, because this is the time period when we have to get together to face the challenges around this world. We have to be courageous. We have to love our family. We have to love our community. We have to serve our community. जहाँ तक हो सके आप फैमिली को टाइम दें, जहाँ तक हो सके आप अपने बिजनेस को टाइम दें और राइट डिसीजन करें एट द राइट टाइम. because if you cannot make the right decision you will have to suffer for longer, maybe for years, for months. तो इसलिए right decision करने के लिए आपको right action के लिए right decision की ज़रूरत होती है. ठीक है, आप सब लोगों का बहुत शुक्रिया and take care of yourself. If you haven't subscribed my UK Immigration YouTube channel, you can subscribe now. And if you haven't joined my UK Immigration Facebook private group, you can send me request now and then I will accept your request.
If you need further consultation, you can send me text message with the name of consultation. I will book your call and give you proper professional advice in terms of the basis of your application. And if you have received any refusal in terms of your UK immigration application, send me your refusal and then I will book consultation for you. I will give you further advice. So take care of yourself and bye bye.